We are here to entertain. Lord, we thank you for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care, and all the benefits of one so fair. Help us do the things we do, and all to be just kind and good. In all we do, at work or play, to grow more loving every day. Thank you, God. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. It's so high, you can't get over it. So deep, I can't get under it. So wide, I can't get around it. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Yasmin ma'am, on behalf of ISRI, faculty and students, I welcome you all, ma'am. Day, which is going to be a memorable one today. Every day is a day of learning. We have a day only once in a year, that is Children's Day, where we celebrate or we remember the eminent personality Chacha Nehru. So today it is his birthday, which is observed as Children's Day. So on behalf of the management, I welcome you all and wish you all happy Children's Day. So today I am taking up the job of doing the comparing. So today we have a list of activities within ourselves that is inside them. Children are like flowers in the garden which bloom with innocence, love and care. A very happy Children's Day to my admirable students. Being a principal, I take this opportunity to thank all of you for being present here. 14th November is celebrated as Children's Day all over India to commemorate the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Childhood is a special phase of life and you all should live life to the fullest during this time. Teachers become educators not only because of knowledge, but you students play a very important role in our lives. Nehru always appealed to the children to climb the ladder of success with utmost dignity and respect. Keeping this fruitful welcome speech, I once again welcome you all. On to the next program, I would invite Priya Miss to tell about the importance of the day. Everyone, happy Children's Day. Good morning, esteemed principal. Today in place of you, we people are standing. For what? To conduct an assembly, right? Morning assembly. Speak about the importance of the day. So good morning, respected management members, principal, teachers, and my dear students. Today we gathered here to celebrate the momentous occasion of Children's Day. This is the occasion to celebrate the happiness and innocence of children. On this day, we pay tribute to Pandit Jawaharlal Nehru, our Prime Minister, as November 14 commemorates his birth anniversary. Pandit Nehru had a deep and profound love for children. He believed that they represented the future of the country. He was a prominent freedom fighter. Kids often referred to him as Chacha Nehru. He cherished all children irrespective of their religion, caste or economic status. He advocated for their education so that they can fulfill their dreams. We should make use of this occasion and spread the importance of protecting the rights of every child. Let us make the world a better place for the future of tomorrow.
So once again, Happy Children's Day. Priya Miss, for giving such a valuable message about the importance of Children's Day. Moving on to the next thing is the thought for the day by Palguni Miss. Good morning, children. ಎಲ್ಲ ISRI ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ 100 ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಮಾನ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು ಇವು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಅಧ್ಯಯನವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ. For the wonderful thought for the day. Next we have Mrs. Rajini Rani to say the thought for the day in Hindi. Children, Happy Children Day. We are know हम लोग क्यों मनाते हैं चिल्ड्रन डे? क्यों मनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिवस पर। चाचा नेहरू का था बच्चों से पुराना नाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का जिसे पूरा देश बाल दिवस के रूप में है मनाता। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा बचपन समय होता है। बचपन एक बेहद अनमोल खजाना है। इससे जुड़ी यादें व्यक्ति को भावुक कर देती है। हम लोग जो बचपन में जितने भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी करते हैं, वो सभी बड़े होने पर याद आते हैं। हम लोग को बचपन का भी वो कभी लौट के नहीं आता। सबसे ज्यादा एंजॉय हम लोग बचपन में करते हैं। अपने टीचर को, अपने दोस्त को, अपने परिवार को, सभी की यादें हमें बड़े तक याद बनी रहती है। वो बचपन का जमाना था जो खुशियों का खजाना था। पर दिल तो तितली का दिवाली था। बाल दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन है बच्चों का कोमल मन का और कच्ची कलियों का। मन के सच्चे यह प्यारे बच्चे, चाचा नेहरू के प्यारे बच्चे। धन्यवाद। Without a celebration to the feast to the eyes and ears, will it be very good, children? Will you like a program without song and dance? You all would like to enjoy, na? You have to listen and you have to see. God has given 5 sense organs for us to enjoy everything, the beauty of the life. So today's program, without a song and a dance, will not be a fulfilling. Yes or no? Will you all be happy or sad? Sad, na? So here now our teachers are going to come and sing a song for you all. You can join along with them. काठी पे घोड़ा, घोड़े पे दुम मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े पे दुम मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धूम उठा के दौड़ा। घोड़ा का झटक में चौक में खड़ा, कोई भी बिनाई मुझे चाहत जो बनाए। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। छोटी सी आशा भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्त भर मन में भोली सी आशा।
Yes, I think, because even if it is an old song, but it is an evergreen song. Next we call upon the teachers for a Kannada song. ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳ